A very good morning, my dear students. We are continuing chapter 3, the basis of human behavior. And we had already covered the first part, that is biological behavior, a biological basis of behavior, in which we had studied about so many things: the nervous system, the neuron, and the gene and chromosomes, the endocrine system as well as. And yeah, in a second part of this chapter is the social basis of or the cultural basis of the behavior, in which we had completed the concept of culture, the meaning and the definition of culture, and the three basic processes of cultural transmission, that is enculturation, socialization, and acculturation. So in which we had already completed the topic socialization and the enculturation, and the last topic is acculturation, and we had already studied about the concept of acculturation. So basically acculturation is refers to cultural and psychological changes resulting from contact with other culture. When the one culture is interacted with other culture, so definitely the changes is occur in a both side. The interactive process in which the basis of the culture, the ideas, the belief system, all things are basically changed due to impact of other culture. So this process is basically known as acculturation. So there are mode of acculturation is basically four: the direct and the indirect, the voluntary and the involuntary. Direct, that's mean when you are connected with other cultures people or the other cultures directly, and indirectly that's mean that through the media, through the social media, through the newspaper, through the any other mode. Okay. And involuntary, when you wanted to interact with some people of some other cultures, that means the interaction with other cultures basically in your voluntary participation you wanted to do that. And the involuntary, that's mean due to some political reasons, due to some you can say economical reason. Okay. Due to these reasons you forcefully contact with other cultures. Okay. This is concept of the culture. Now there is two more important thing is that the changes due to acculturation may be examined at the subjective level and the objective level. Okay. Subjective level, that's when change clearly seen in your ideas, your thoughts, your thinking patterns, your values may be changed. This type of changes is known as subjective changes. And the objective changes, that mean your fooding style, your wearing style, your transportation, your living style, basically your daily routine. Okay. When we are talking about the eating in a pizzas and burgers, french fries, this is basically a westernization concept. When we are wearing jeans, this is the western contact. Okay. Due to western context we are wearing this type of things. The english language, which is also known as the process of the acculturation. Okay. So these kind of changes in your lifestyle, in your wearing sense and eating habits, ठीक है, डेली रूटीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, दिस इज कंसिडर्ड इन objective changes. Okay. Now the remaining part of the cultural acculturation and the cultural transmission is the four you can say strategies. Okay. The techniques in which the acculturation is basically happened. So these are basically four in numbers. Let's look at the concept. So in this section, the John Berry, who is a very known, very popular psychologist, who is basically working in this field, and according to his study, he suggests that the two important situations, two important contacts on the which basis they explain their strategies. So one relates to the degree to which there is a desire to maintain one's cultures and identity, and another second point is another related to the degree to which there is a desire to engage in daily interaction with members of a other cultural group. So these are the two point or two situations in which the acculturation is basically happened. So based on people's positive or negative answer to these issues, the following four acculturation strategies have been derived. So first one is integration. Okay. So in integration there is the integration, assimilation, separation, and marginalization. These four strategies, and sequence are not appropriate in this slide. So
carry out according to your text. So first one is the integration. So it refers to an attitude in which there is an interest in both maintaining one's original culture and identity and while staying in daily interaction with other cultural groups. So in this case there is some degree of cultural integrity which is maintained and while interacting with other cultural groups. ठीक है. सो फर्स्ट सिचुएशन ये है, फर्स्ट कल्चर यहाँ है ये है कि आप सेकेंड कल्चर जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो उससे भी पॉजिटिवली देख रहे हो और अपने कल्चर में भी को भी पॉजिटिवली देख रहे हो. दैट्स मीन द पॉजिटिविटी इट इन द बोथ पॉइंट. जो प्रीवियस हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, ऑन दिस बेसिस द इंटीग्रेशन इज दैट जहाँ आप अपनी कल्चर की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रूट्स है, आपकी वैल्यूज़ है, आपके आइडेंटिटी है, उसे आप मेंटेन भी रख रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर इंटरैक्टिंग विथ सम अदर कल्चर. मतलब आप रिजिड भी नहीं हो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो दूसरे की चीज़ों को, यू आर एक्सेप्टिंग इट बट इन अ लिमिटेड अमाउंट. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय योर आइडेंटिटी, योर ओन वैल्यूज़. अपने वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करके किसी की कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. यू रिस्पेक्ट सम अदर कल्चर, यू इंटरैक्ट विथ अदर पीपल्स बट at the same time you maintain your own identity, your own culture. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका होगा तो वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है. उन्होंने कहीं से किसी भी चीज़ से अपनी कल्चर को कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उसे कभी डिनाई नहीं किया, उसे कभी भी हार्म नहीं किया, उसे कभी भी लीव नहीं किया. बट एट द सेम टाइम दे रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स ऑल्सो, दे इन्फ्लुएंस बाय अदर कल्चर्स ऑल्सो. ठीक है. सो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल हो सकता है उनका. नाउ सेकेंड इज एसिमिलेशन. इन दिस it refers to an attitude which people do not wish to maintain their cultural identity and they move to become an integral part of the other culture. So in this case there is loss of one's culture and identity. ठीक है. सेकेंड एसिमुलेशन में क्या है, यू आर अ हाई पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ इंटरैक्टिंग कल्चर बट यू डू नॉट रिस्पेक्ट एंड यू डू नॉट मेंटेन योर ओन कल्चरल आइडेंटिटी. ठीक है. दैट्स मीन इन दिस इन द एसिमुलेशन आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो दूसरे के कल्चर से, इतना ज़्यादा इंटरैक्शन हाई लेवल का है कि यू बेसिकली ट्रांसफॉर्म इन द सेकेंड कल्चर. ठीक है. आप जिस कल्चर से इन्फ्लुएंस हो, जिस कल्चर के साथ आपका इंटरैक्शन है, रिलेशन है, आप अपने ओन कल्चर को छोड़ के और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हो इन दी सेकेंड कल्चर. ठीक है. बहुत सारे यूथ्स ऐसे आपको मिल जाएंगे इंडिया में जो बेसिकली इंडियन कहलाने लायक नहीं है. ठीक है. दे बेसिकली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टू दी वेस्टर्न कल्चर्स. ठीक है. एग्जाम्पल देना तो नहीं चाहिए, वैसे आपको बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे या बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनको आप कह ही नहीं सकते कि ये इंडियन है. कोई किसी एंगल से वो इंडियन कल्चर को मेंटेन नहीं रखते हैं. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एक्ट्रेसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने कल्चर को मेंटेन रखते हैं, स्टिल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया का नाम रोशन करते हैं एंड अपने कल्चर की वैल्यू भी करते हैं और इंटरनेशनली पॉपुलर भी होते हैं, पॉपुलैरिटी भी गेन करते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं. सो इन एसिमुलेशन द सिंपल थिंग इज दैट द नेगेटिविटी टुवर्ड्स योर ओन कल्चर एंड द मोर पॉजिटिविटी टुवर्ड्स द अदर कल्चर विच कल्चर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड यू. So third one is a separation. In this it refers to an attitude in which people seems to place a value on holding on to their original culture and wish to avoid interacting with other cultural group. So in this case people often tend to glorify their cultural identity. Now separation that's mean आप typically understand कर सकते हो on the basis of रूरल एरियाज़ में आपको बहुत सारे ऐसे ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स मिल जाएंगे बेसिकली जो इतने ज़्यादा रिजिड हैं. दे डोंट एक्सेप्ट दैट एनी थिंग विच इज़ न्यू, एनी आइडिया विच इज़ न्यू, एनी ट्रेडिशन विच इज़ न्यू, दे डोंट एक्सेप्ट. बेसिकली रिजिडिटी होती है. सेपरेशन दैट्स मीन द सेपरेट फ्रॉम दी वर्ड. ठीक है. वो अपने आप को सेपरेट रखते हैं, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए इतने ज़्यादा एक्सेसिवली पॉजिटिव हैं वो अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ के को मेंटेन रखने के लिए. उनके लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है अपनी वैल्यू, अपने कल्चर के लिए कि वो अदर कल्चर का ज़रा सा भी इन्फ्लुएंस टॉलरेट नहीं करते. दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद एनी अदर कल्चर. और अगर कहीं से इंटरेक्शन होता भी है तो उसको बिल्कुल वो बाउंडेड करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते वो दूसरे कल्चर की किसी भी चीज़ को.
वेलकम बिल्कुल नहीं करेंगे वो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ नोन एज सेपरेशन, ठीक है। बहुत सारे आपको ये आपके जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है टूवर्ड्स टू जनरेशन, ठीक है, हमारे और हमारे ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर्स के बीच में जो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। वो बिल्कुल रिजिड हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते दूसरे कल्चर में। हमारी जो जनरेशन है, दिस इज जनरेशन इज बेसिकली मिक्स जनरेशन, हमारी और आपकी जो जनरेशन है, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम, ठीक है, हमसे भी नेक्स्ट जनरेशन हो आप, तो वो जो जनरेशन है दे आर बेसिकली मिक्स कल्चरल जनरेशन, ठीक है। आप पे वेस्टर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन का मिक्स इम्पैक्ट है। आप प्योरली इंडियन जनरेशन नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से आ चुकी हैं, इंडिया बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आपकी जो जनरेशन है और उनकी जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज है। सो दिस इज़ द टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन, जहाँ आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो टुवर्ड्स योर ओन कल्चर एंड एक्सट्रीमली नेगेटिव टुवर्ड्स द अदर कल्चर. Now the last one is a marginalization. So in marginalization, it refers to an attitude in which there is little possibility or interest in one's cultural maintenance and little interest in having relations with other cultural groups. So in this case, people generally remain undecided about what they should do and continue to stay with a great deal of stress. ठीक है. So this is a very interesting category basically, marginalization, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है दे इवन डोंट डिसाइड कि उसे क्या करना है, कोई व्यू ही नहीं है उसका, कोई व्यू पॉइंट नहीं है, दे एक्चुअली कन्फ्यूज्ड about their own culture also and about the other cultures also, ठीक है. they actually suffering in a confusing state, जहाँ पे वो डिसाइड ही नहीं कर सकता कि उसको अपने कल्चर को मेंटेन करना है या वेस्टर्न कल्चर को. एक होता है ना कि पानी के बहाव के साथ बहा चलो, वैसा वाला उसका हाल रहता है. द इन मार्जिनलाइजेशन द इंडिविजुअल इज बेसिकली सफरिंग विद द फ्लो ऑफ द एंटायर सोसाइटी. जिस तरह से चल रहा है वैसे चलने दो, कोई किसी तरह का कोई आर्ग्यू नहीं करना, किसी तरह का कोई स्टेप नहीं उठाना, किसी तरह का इनिशिएशन नहीं है एंड किसी भी तरह का एफर्ट नहीं करना है, बट फ्लो के साथ चलना है. एंड इन एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट फील करता है, बिकॉज दे डोंट डिसाइड कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड. सो दिस स्टेज इज बेसिकली नोन एज मार्जिनलाइजेशन. नाउ द इंटीग्रेशन, द एसिमिलेशन, सेपरेशन एंड द मार्जिनलाइजेशन. ठीक है. इंटीग्रेशन जहाँ पे आप अपने कल्चर को भी मेंटेन कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप दूसरे कल्चर को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसकी भी चीज़ों को भी अडाप्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो उसके साथ भी, बेसिकली वार्मली अडाप्ट कर रहे हो वहाँ की चीज़ों को भी, पॉजिटिव चीज़ों को. नाउ द एसिमिलेशन, इन एसिमिलेशन आप अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, आप अपने कल्चर की वैल्यू नहीं कर रहे हो और कम्प्लीटली आप ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हो मॉडर्निटी की तरफ, या दूसरे कल्चर की जो भी वैल्यूज़ हैं, दूसरे कल्चर का जो भी बिलीफ सिस्टम है, वहाँ टोटली आप कन्वर्ट हो जा रहे हो. नाउ सेपरेशन दैट्स मीन रिजिडिटी टुवर्ड्स योर ओन कल्चर, टुवर्ड्स द चेंज ऑफ योर कल्चर एंड द लेस इंटरेस्ट इन द अदर कल्चर. एंड द मार्जिनलाइजेशन दैट्स मीन द अनडिसाइडेड स्टेट, जहाँ पे आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी कल्चर की वैल्यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हो या अदर कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो. ठीक है. दिस इज़ द कम्प्लीटली कन्फ्यूजिंग स्टेट. So you have read in this chapter that human behavior is not fully under the control of biological factor alone, and socio-cultural factor interact with biological dispositions of individuals to give a particular shape to their behavior in a given society. So since societies and cultures across the globe are not homogeneous, human behavior is also not expressed in the same way everywhere. So this basically allows us to say that besides biological roots, there are cultural roots of human behavior. While genes write the script of biological transmission, memes write the script of cultural transmission. There is a term memes, that means the smallest unit of cultural transmission, memes, which is known as. Okay, as like the genes is the smallest unit of genetic transmission, as like the memes is the smallest and the first unit of the cultural transmission. So memes write the script of cultural transmission. जैसे कि जीन्स हमारे ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द जेनेटिक्स, सो द memes is write the script about our cultural transmission. So the genes and the memes work together to allow behavior to unifold
unfold partially in some similar and partially in different ways, so within and across societies. So understanding of cultural basis of behavior will make you realize that behavioral differences between individuals or groups are not due to the structural and functional properties of their biological systems alone, but cultural features of individuals and group contribute in significant way in generating behavioral differences. That's mean the differences, the individual differences which we see across the world, that is not only मिल रहे हैं, एक इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है, जो उसकी पर्सनालिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आर बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक फैक्टर एंड द कल्चरल फैक्टर. ठीक है, इन दोनों के इंटरेक्शन से जो कुछ आउटपुट आता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, दैट इज आवर बिहेवियर बेसिकली. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. And this is, I think, 8th video of this chapter. So this is all about the chapter. If you have any other doubt, then ask me in the online session, and let's discuss some questions. So first of all, NCERT questions. First question is, how does the evolutionary perspective explain the biological basis of behavior? Okay. In this section, you have to write down the whole evolutionary part, in which the explanation of the changes in our brain structure and how the individual is, how the human being is basically different from the other species. These all changes we have to write down in answer. Now the second question is, describe how neurons transmit information. In this section you have to write down the action potential as well as the synaptic transmission. Okay, the electrical transmission and the synaptic transmission both in a short. Okay, now next is, name the 4 lobes of the cerebral cortex and what function do they perform. This is very interesting question. In this section you have to write down the 4 lobes, and the functions of these 4 lobes. And if you draw a diagram of the of brain, then your answer will be more attractive and complete. Now the next question is, name the various endocrine glands and the hormones secreted by them. So how does the endocrine system affect our behavior? This is also interesting question. You have to write down, if you draw a figure, then it will be more effective and it will be more attractive. So, or you can draw a chart also. In one section you have to write down the whole glands, the starting from the pituitary, then thyroid, then parathyroid. इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हो जहाँ सारी ग्लैंड्स है, then the releasing hormone and the impact of the behavior. ठीक है, इस तरह से आप 3 कॉलम में एक चार्ट भी बना सकते हो. तो then your answer will be definitely attractive and complete. Now the next question is, how does the autonomic nervous system help us in dealing with an emergency situation? Basically in this section you have to write down the autonomic nervous system, the sympathetic and the parasympathetic, the role of sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system, which hormone is released from the sympathetic nervous system, and how it controls our behavior. You have to write down in this section. So next question is, explain the meaning of culture and describe its important features. In this section you have to write down the concept of culture little bit and the taken examples and important features of cultures. I can read. The culture includes behavioral products of others. The important feature of the culture are followed. So first one is, the culture includes
behavioral products of other who precedes us, and it indicates both substantial and abstract particulars that have prior existence in one form or another. Second point is it contains values that will be expressed and a language in which to express them. Third one is culture characterized by sharing reflects presence and experiences of cultural attributes psychologically. Last point is that cultural involves transmission of learned behavior from one generation to the other within a community. Okay, these are the characteristics, these are the important features of cultures. Now the next question is, do you agree with the statement that biology play an invaluable role while specific aspect of behavior are related to cultural factors? So give reason in support of your answer. In this section you have to compare these both roots, the biological and the cultural, how the behavior is more important than the biological or the more importance of the cultural. Okay, or it is both are equally important. You have to decide it, you have to conclude in a last line. So you have to describe the biological factor first, then the cultural factor first, how it is related to our behavior, then in the last you have to write down your conclusion, which factor is more influencing or the both is equally important for our behavior. Now the next question is that describe the main agents of socialization. In this you have to write down the first of all concept of the socialization, what is socialization, after that the agents like parents, school, peer group and media influences. These are the agents of socialization. Now next question is, how can we distinguish between enculturation and socialization? Explain. In this section you have to write down the enculturation, define the enculturation, after that define the socialization, and in a next paragraph you have to explain how the enculturation and the socialization are related to each other and how it is beneficial for us. The combination of both is important for our development and our appropriate cultural transmission. Now the next question is, what is meant by acculturation, and is acculturation is a smooth process? Discuss. So in this section you have to describe the concept of acculturation and why this is a very smooth process, and if not then why. Okay. So this is all about. And the next and the last NCERT question is, discuss the acculturative strategies are adopted by individuals during the कोर्स ऑफ अकल्चरेशन. सो अकल्चरेशन के बेसिस पे जो अभी लास्टली मैंने एक्सप्लेन किया, द इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, सेपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, दीज 4 strategies you have to describe in detail. This is all about NCERT question. Let's look at some other questions. First of all, very short answer type questions. So first one is define neuron, then define soma or cell body, differentiate between sensory nerve and motor nerve. You have to explain the characteristic of sensory nerve and motor nerve. Then what are the function of nerve impulse? In this section you have to explain your answer in a very limited word. Okay. So you have to develop the ability, how the answer is written in a very short form, and how can we elaborate it. The meaning of genes. In this section you have to explain the concept of genes. What is genes? Differentiate between genes and memes. This is interesting question. Basically you have to write down the gene is a smallest unit of genetic transmission, as the memes is a smallest and the first unit of the cultural transmission. Memes prepare a script of cultural transmission, and the genes is basically a blueprint of our development as like a physical and the psychological characteristics. Next question is what are important determinants of human behavior? In this section you have to write down the important determinants like biological and the cultural also. Now what are the various function of neuron? This is the direct question, and gives schematic representation of the nervous system. तो इसमें आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करना है.
I will share it. Then what are the function of hypothalamus? So in this section you have to write down the function of hypothalamus. What are the function of reflex action? ये भी in detail आपको करना है, कुछ points के basis पे explain करना होगा. Then short answer type questions. Differentiate between society and culture. Okay, in this section you have to explain the what is difference between society and the culture. Now classify neurons. Neurons को classify करना है. What are the types of neuron? The sensory, the motor and the mixed, you can say, or the multipolars. According to nature of transmission, there are 3 type of neurons: sensory neuron, motor neuron and multipolars. According to number of pores, there are unipolar and bipolar, and based on the presence of myelin sheath, the myelinated neuron and the non-myelinated neuron. These are the 3 categories. Now discuss the structure and function of the spinal cord. You have to explain the whole spinal cord. Then next is write a short note on chromosomes. Simple answer. What is inculturation and discuss its main features. Whole concept of inculturation and effect of inculturation. Take an example from our daily life. Then long answer type question. First question is name the various endocrine gland and the hormones secreted by them and how does the endocrine system affect our behavior. यहाँ पे आप एक अच्छा सा चार्ट बना दोगे ना, द ग्लैंड्स एंड द सिक्रेटेड हार्मोन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द बिहेवियर, ठीक है, और द टारगेट बिहेवियर. तो इस तरह से अगर आप चार्ट बनाओगे देन आप एक्सप्लेन भी कर दोगे तो योर आंसर विल बी डेफिनेटली completed and attractive. You definitely got a high marks or full marks. Next is explain the structure of brain. Whenever the ask is structure of brain, you have to draw a beautiful colorful diagram. बेसिकली दिस चैप्टर बायोलॉजिकल पार्ट जो है वहाँ पे अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है एंड यू हैव टाइम तो आपको डायग्राम, कलरफुल डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करोगे, लेबल डायग्राम करोगे तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव. एक्सप्लेन तो करना ही करना है, डेफिनेटली करना है, बट अगर आप अट्रैक्टिव करना चाहते हो आंसर को तो यू हैव टू राइट डाउन द डायग्राम्स. Only 2 questions in long answer type questions. There is some other questions, but I think this much is sufficient. So I will explain only the long answer type question. The first one is elaborate upon the structure, feature and function of the brain, the whole brain. Then next question is describe the somatic nervous system. Then next is describe the structure and function of the brain, again the same question. And the describe different endocrine glands. Next is what do you mean by culture and differentiate between culture and society. This is interesting question. आपको यहाँ पे इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना होगा. So this is all about the chapter 3. Our next chapter is the human development. This is also very interesting chapter. इस chapter में आप different ages के साथ जो हमारा different stages हैं हमारी जो from prenatal to postnatal, then the early childhood, then the late childhood, adolescence, puberty, then the old age, middle age, सारी जो एज के वाइज आपने देखा होगा कभी चार्ट में. तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पर्टिकुलर किसी एक स्टेज में, वो आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करोगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड द लेंथी ऑल्सो. Okay, so this is all about today videos, the basis of human behavior. I think it is the largest chapter of your textbook and this is also a scoring chapter. बहुत सारे questions आते हैं इससे, but most of the time very short answer type and short answer type आते हैं. long question इससे कम आते हैं, but this is important for exam point of view. Okay class, thank you so much.